नमस्कार बच्चों, वेलकम टू लोकन क्लासेस। तो इस वीडियो में हम करेंगे MCQs चैप्टर 2 मैथ्स क्लास 10। तो पहला है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x स्क्वायर माइनस 6x 16x प्लस 30 सो दैट 15 इज द जीरो पॉलिनोमियल। तो बच्चों लेट अस सपोज दैट वी सब्ट्रैक्ट k फ्रॉम दिस। तो x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 30 माइनस k इज इक्वल टू 0। तो अगर 15 इसका 0 है तो 15 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 15 प्लस 30 माइनस k इज इक्वल टू 0। 225 माइनस 240 प्लस 30 माइनस k इज इक्वल टू 0। That is minus 15 plus 30. So that will be minus plus 15 is equal minus k is equal to 0. So k is equal to 15. So our answer is 15. The number of polynomials having 0, minus 3 and 5 is either 1, 2, 3 or more than 3. तो देखते हैं हम कितनी पॉलिनोमियल हो सकती हैं। तो ऐसी पॉलिनोमियल जिनकी 0, माइनस 3 और 5 है, तो दैट इज k x प्लस 3 एंड x माइनस 5। तो ये पॉलिनोमियल हो सकती हैं जिसमें k की वैल्यू 0 भी हो सकती, 1 भी हो सकती, 2 भी हो सकती एंड सो ऑन। So there will be more than 3 polynomials. If the zeros of quadratic polynomial x square plus a plus 1 x plus b are 2 and minus 3, then find a and b. So polynomial with zeros 2 and minus 3 is x minus 2 x plus 3, and that will be x square plus x minus 6. Comparing this with this, then a plus 1 I will get 1 and b is minus 6. So a will be 0 and b will be minus 6. That is the answer. So D is the correct option. 1 0 of polynomial x square plus 3x plus k is 2. The value of k. So 1 0 of polynomial x square plus 3x plus k. That means x square plus 3x plus k. तो अगर इसकी पोलिनोमियल की 0 2 है तो दैट विल बी 2 square plus 3 into 2 plus k is equal to 0. 4 plus 6 plus k is equal to 0. So k is equal to minus 10. So A is the correct option. The sum and product of zeros of polynomial is minus 4 and 3. तो पॉलिनोमियल क्या है? तो पॉलिनोमियल होती है बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो एक्स स्क्वायर सम इज minus 4, that is minus 4 and product is 3. So 3. So x square plus 4x plus 3. That is the correct option. The zeros of polynomial 3x square plus 11x minus 4. तो इनकी zeros निकालने के लिए 3x square plus 11x minus 4, that is 3x square plus 12x minus x minus 4. 3x common, x plus 4 minus 1 common, x plus 4. So x is equal to 1 upon 3, x is equal to minus 4. So the correct option is 1 upon 3 and minus 4. C is the correct option. The zeros of polynomial x square minus 3x minus m plus 3.
तो इसकी जीरोस क्या होंगी, इसकी जीरोस होंगी जैसा कि हम अभी निकाल लेंगे, तो ये जीरोस होंगी -m और m+3। नेक्स्ट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of zeros is -5 and product of zeros is 6. Again, x square minus sum of zeros into x and plus product of zero. So sum of zeros x square minus -5x and plus 6. So the polynomial will be x square plus 5x plus 6. तो बच्चों ये 8 MCQs, इसके बाद हम आगे करते हैं। नेक्स्ट इज which of these are the zeros of polynomial x minus 7? Question number 9. Which of these are the zeros of polynomial x minus 7? तो बच्चों जैसा कि इससे पता लग रहा है, इसकी एक जीरो होगी 0 और सेकंड जीरो होगी 7. तो करेक्ट ऑप्शन विल बी द zeros will be 0 and 7. Next is, if the zeros of polynomial are 7 and minus 11, if zeros of polynomial are 7 and minus 11, then they cut the x-axis, then they cut the x-axis at which point? So the options are 7 0 and minus 11 0. Second is minus 7 0 and 11 0 and so on. तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमारी पॉलिनोमियल है तो उसकी जो जहां पे वो x एक्सिस को काटेगी तो zeros are the values of x. तो zeros are the values of x and the y is 0. So the correct option is 7 0 and minus 11 0. Next is the polynomial x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divisible by, तो इसमें ऑप्शन है मेरे पास x minus 1, x plus 1, x minus 2 and x plus 2. तो जैसा कि हमें पता है अगर हम इसमें इनमें से कोई भी वैल्यू रखेंगे, अगर 0 आ जाती है तो वो उसका फैक्टर होगा। तो x माइनस 1 की में वैल्यू होगी x की प्लस 1, ठीक है, और x प्लस 1 में x की वैल्यू होगी -1। तो हमें इससे पता चल रहा है अगर हम x की वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 plus 3 minus 3 plus 1, it comes out to 0. So the correct option is x plus 1. Next is, if one of the zero polynomial 2x square plus 7x plus 3 is -1/2, then what is the other zero? तो बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस
is C upon A, that is 3 upon 2. And if one of the zeros is minus 1 upon 2, minus 1 upon 2 into x is equal to 3 upon 2. So x is equal to 3 upon 2 into 2 upon minus 1, that is minus 3. So other zero will be minus 3. That is the correct option. Next is, if one zero of the polynomial if one zero of the polynomial x square minus 7x plus 10 is 5, then the other zero, तो दूसरी जीरो क्या होगी? Again, sum of zeros is C upon A, that is 10. Sorry, minus B upon A. So that is minus 7. So B upon A is equal to 7. So 1 0 is my sum is 7. So first 0 is 5. The other 0 will be minus B upon A. So plus 7, 5, 7 minus 5, that will be 2. So 2 will be the correct option. Now what should be added to polynomial? X square minus 5x plus 4, so that 3 is the zero of resulting polynomial. So let us suppose we add k. So 3 is the zero. So we will put the value of x as 3. 3 square minus 5 into 3 plus 4 plus k is equal to 0. So 9 minus 15 plus 4 plus k is equal to 0. So 9 and 4, 13, that is minus 2 plus k is equal to 0. So k is equal to 2. So 2 will be the correct option. तो बच्चों आज हमने इस वीडियो में 15 MCQs सॉल्व किए हैं, उनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की है। आगे की सीरीज में अभी हम सॉल्व करने वाले हैं और भी MCQs और अलग अलग चैप्टर से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।